May I come in, sir? Please. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Please sit down. Thank you, sir. What's your name? Sir, my name is Vaibhav Barsaiya. So, Mr. Vaibhav, kindly tell us something about yourself. आप हिंदी में बात करना चाहेंगे, इंग्लिश में बात करना चाहेंगे? Sir, mix better रहेगा. मिक्स तो पता नहीं ना होता कि कितने % मिक्स करना है. So then English would be good, sir. Okay, right. Tell us something about yourself. Sir, my name is Vaibhav Barsaiya. I am from Chhatarpur, which is a small town in the Bundelkhand area of MP. I did my schooling there, and after that I went to complete my graduation from IIT BYJU, and since then I've been preparing for their competitive exams, and this is my second attempt. What are your hobbies? Sir, currently I am not able to follow any hobby because of the preparation, but back then in the college I used to play cricket and carom and badminton in a casual manner. You've also said that you listen to contemporary songs. Yes. What is contemporary? What do you mean by contemporary songs? So, songs that are being there in this decade or past 2 decades, I think. Not too old songs. So, decade or 2 decades? So not so there's no defined, but sir, around after 2000s. And which songs? What type of songs? So every type of songs are Hindi, English, maybe Spanish, something. Any song that is Tamil, Telugu. Yes, sir. Do you understand these other Indian languages? No, sir, I don't. But sir, I enjoy the music. Because when it comes to this, then that music, you're talking of all Indian languages and all international languages. Yes, sir. Understand the meaning of using this word. Sorry, sir? I said, do you understand the meaning of the use of this word? Contemporary can mean a song in any language of the world. Yes, sir. And in the past decade or 2, as you were saying. Sir, I'm not. Okay, sorry, sir. It's in the recent times only. Now, you have studied in Banaras Hindu University, and there is Aligarh Muslim University also. Yes, sir. Is it proper in secular India to have names of universities having the names of religions also? Banaras Hindu University, Aligarh Muslim University. When BHU was established, those were different days. These words, to my mind, should be eliminated, Hindu and Muslim. What do you say? Sir, I think, sir, the name, sir, it's yes, sir, it's a little bit not to the current times, but sir, I also think that it is also a kind of some name attached to it. There's a fame attached to the name, and if you change the name now, sir, it would not be that good. And sir, there's nothing. Sir, these institutes are quite secular in their nature. So unless there is no activity is going on, then sir, I think name is okay, sir. No, the name and fame part, fame now, Narendra Modi is the Prime Minister now. 7-8 years, he is very famous now. Fame has nothing to do with it. So, but right? So they have a very, secular, so they run by very secular, in a secular manner. So tomorrow, if you want to have another university, I'm saying it's a Sikh university, it's a Jain university, it's a Buddhist university, it can happen. Yes. And why one Muslim university or one Hindu university, you can have 30 more. Will you accept it in this country? Sir, so that's not for me to comment, sir, but I think, sir, it's permissible in the constitution. I'm asking your view. Yes, you are an informed yes, citizen of India. Sir, since it is permissible in constitution, I think, sir, it is okay. It is not. That's what I'm saying. We are a secular country. So, but sir, by just giving a name Hindu does not mean, sir, it's not secular. When are Gujarat elections being held? Sir,
I'm not sure. How many seats are there in the assembly? Sir, I'm not sure, sir. You're not aware of that. My last question to you is that tell me 3 acts for empowerment of women passed by the Parliament of India. So recently I am aware of the Triple Talaq law that was passed, and sir, I'm not sure of the law, sir. I know only one. Vaibhavji, who is the Vice Chancellor of Banaras University nowadays? Sir, last time I checked it was Pramod Kumar Jain, sir. Nowadays? So nowadays I'm not, sir, following. Okay. And who is the Director of BHU IIT nowadays? Sir, I'm not following, sir. So he's a professor from IIT Gandhinagar, I know that. But he is Vice Chancellor, he is not Director of IIT. Sir, I'm not aware, sir. Huh? So I'm not following, sir. Okay. And during your time, who was the Director of IIT BHU? So I'm unable to recall the name, sir. Achha. And VC of BHU? Okay, in which hostel you were staying? Vishwasaraya? Sir, no, sir. I was in Limdi hostel. Okay. And before that, I was in Morbi, and before that, SN Bose. In? SN Bose. SN Bose. This is a new hostel or what? Yes, sir. It was being built recently. I see. So why Limdi hostel is named Limdi? So, these are all hostels are named after scientists. So I'm not sure, but surely. Are you sure it is named after scientists? So most of the hostels are named after scientists. Are you sure? Birla was a scientist? No, sir. I'm not aware, sir. And Vishwasaraya was a scientist? Sir, Jandajgiri was a scientist? V.V. Raman was a scientist? Okay, doesn't matter. Sir. And when is the foundation day of BHU celebrated? Sir, of BHU it is 1916 and of IIT BHU it is 1919. Okay, good. What was your project in BTech? So my project was on studying the effect of soil structure interaction over the buildings. Soil structure interaction over the building? Yes, on the buildings. Okay. So what was the finding of your thing? So my finding was that when we use this effect of soil structure interaction, it provides kind of dampening to the system, and it reduces the overall acceleration and velocity of the peak acceleration and velocity of the structure. So it is beneficial to the structure, and we can make our designs a little more conservative using this. Okay. So was there any future application of this project? Yes, sir. There were. My scope was very limited, but it was idealistic case. My case was idealistic case, but in reality, there were a lot of future scope, like using a nearby buildings, because there are always nearby buildings. So studying their effect and then coming to a conclusion. Any recent paper on this project? Any recent application which you might have come across of this project? Sir, I have not followed since you have not college. Followed. Okay. What was your favorite subject? So my favorite was RCC and Geotech. Okay. RCC. What is the life of RCC structure? Sir, generally, sir, 50 years, 30 years, 50 years. Why RCC life is only 50 years? So, because after that, steel starts to deteriorate a little bit. Why does it deteriorate? So why does it not deteriorate in a steel structure? Steel is there in a steel structure also. What is so particular about RCC that it deteriorates? Sir, so because of the weather conditions, the steel in the that reinforcement. In a steel structure also weather condition will be there? So because the chemical composition of the structural steel and the reinforcement steel are a little bit different, so their lifespan is also different. They react different to the atmospheric conditions. Any other reason? So any other reason?
Sir, I'm not aware. Which book have you studied in soil mechanics? Sir, Gopal Ranjan. Gopal Ranjan. Okay. Right. What is optimum moisture content? So optimum moisture content is the water content at which the dry density is maximum. And how does the slope failure landslide occur? What is the reason for landslide? So landslide occurs when the shear strength of the soil is less than the shear stress that is acting on the soil. So in that case, the failure of the slope occurs. What is vein shear test? So vein shear test is a field test performed on the loose clayey soils to test their compressive, unconfined compressive strength. Not something. You know who was Tarjagi? Yes, sir. Tarjagi was considered to be the father of the geotechnical engineering, and he has given many theories mainly related to the foundations. What is rock mechanics? So rock mechanics, sir, I'm not sure. I've not run. But But your Madhya Pradesh is full of rocks. yes, sir. Hmm. Sir, but sir, basically, sir, it should be like studying the properties of the rock. Okay. Vaibhav sir? You told your subject was soil mechanics, Yes, sir. favorite subject, and asked you, Yes, sir. how many types of foundations do we encounter in our real life? So mainly we encounter shallow foundations and raft foundations and pile foundation, raft and pile foundations combined. And so also pier foundations in the bridges, pier and well foundations, deep foundation. Okay. Well foundation. Yes, sir. Where you go for pile foundation, where you go for well foundation. So well foundations are used when it is a special case. It is used in a special case when the loads are too heavy, like in the bridge piers and somewhere where the load is too heavy. Point load is acting, and pile foundation is used when the capacity of the soil is loose and we have to build a big structure over it, like high-rise buildings or something like that, and the soil capacity is low. In that case, we go for pile. In the bridges, we don't go for pile foundation at all. No, sir, we go for well foundations for the pier. Which bridge has fascinated you? Sir, I have not been fascinated. Oh, by the bridges? Sir, yes, sir, I'm fascinated by bridges in general, but not in particular. Okay. Any bridge construction you have seen? No, sir, unfortunately, no. Any other construction have you seen? Yes, sir. Which one? So in our college, there was a super specialty hospital was being built in our campus, and I was there as a site visit. Okay. What did you learn out of it? So there was general construction going on. There was concreting being done and a raft foundation being laid out there. The water being used in that construction, what was the quality of water? Did you ever notice? So they were pumping it from the tankers. So I think Okay. What should be the water quality? So the water quality, sir, so it should be ideally drinking water of that quality, but so there are other parameters like the pH level should be 6 to 8 and the organic content should be less than 2000. Agreed. Listen. So at least you knew this while being as a supervision in charge or training part of it. Yes. Did you not notice how the quality of water is coming and comment on it? And similarly, in the gradients we are using, gravels and sand, etc. Quality of all these materials, you have not noticed what have you learnt out of it? I mean, wrong use हो रहा था, अच्छा use हो रहा था, खराब use हो रहा था, बहुत अच्छा use हो रहा था. कुछ mind में आना चाहिए उसको देख करके.
So actually there were some pre-mixed concrete trucks were there, and Okay. they were just pumping Pumping the they were ready-made. yes, a ready-mix concrete, because it is a very congested area nearby. So somewhere from So what did you learn out of it? So mainly I was at that point I learned that like when they were laying the foundation, that they poured it very slowly, and there's nothing special that I learned, but it was just the general construction going on, sir, and everybody was doing their work. Which year? In which year you did? So I was in third year, sir. Third year. In third year, you also go for a field training? No, sir, not field training, just a site visits. Such site visits. Yes, You don't sir. have summer interns? Yes, sir, summer interns. Yeah, Yes, that's, sir. that's what sir is asking. Yes, sir. That Some- was, sir. That was what I was. That was the telling, sir. work which you were doing in the summer interns. Yes, sir. It was just a site visit and just watching. What about, have you understood about earthquake, something like that? Uh, You understand earthquake? yes, sir. You consider earthquake forces into the construction? Yes, sir. Okay. How many seismic zones we have in India? Sir, we have right now we have 4. Name? Sir, zone 2, 3, 4, and 5. Where is one? Sir, it was earlier in the code, but it was being merged with the zone 2, and it was removed. Banaras is in which zone? Sir, Banaras is in zone 4. Yes, sir, zone 4. And Madhya Pradesh? So different parts are in different. My hometown is in zone 2. What is the normal soil bearing capacity of alluvial soil? Sir, I don't know, sir. Maybe in 300 or 400 kPa if it's a dense sand. And sir, around 200 to 50. I am not aware, sir. Okay. When you make a drawing in the design office, you make some standard, you assume some standards bearing capacity of the area in which the building is proposed. And it is written in the notes, before going for it, please confirm the soil bearing capacity after test, if it is not tested earlier. Yes, sir. For normal buildings, say staff quarters, 2-storied building or single-storied building. So some note is written that this soil bearing capacity is being assumed so much. Yes, sir. From that angle, you must be able to appreciate what is the bearing capacity of normal soil. Right? Which can you identify by seeing silt, clay, or sand? Yes, sir. How? Sir, sand is coarse particles and it can be easily distinguished. So they are coarse particles, and for the silt and sand, these are fine particles, and there are some field tests to differentiate them. And so, should I tell? Like sand and sand can be easily differentiated among the three. Yeah. Can you tell me why we use this code IES 13920? So it is for the ductile detailing of the structures. Okay. I will tell you 3 personalities' name. Can you tell me what is common among them? Devdas Menon, PC Bhargich, and Jain Bandhopadhyay. Sir, I am not aware of these names, sir. Which code we use for rigid pavement design? Sir, I think IRC 73. Okay. What is the design? What are the stresses we consider for rigid pavement design? Sir, we consider wheel stress, frictional stress, and the warping stresses. What is the stress combination in summer? So we add the loading and the warping stress and deduct the frictional stresses. Why we deduct frictional stress? So because because in summer it would be expanding, and the surface would be trying to contract it, so it will create a compressive force over the pavement. In your DAF, you have filled CES roads first, and then second you have filled CES. Yes, sir. Why? What is the reason behind this?
Sir, mainly, sir, because I like the fact that the road being constructed in India is like to. Then that means you are telling you like road construction. Yes, sir. Then after preference 1, you should have given border roads then. Why border roads is in 6 then? Sir, because sir, I have no problem, but sir, it is because it is a remote location area, and sir, I would like to be in the mainstream areas. Have you heard about NAPCC? Sir, sorry, sir. NAPCC. No, sir. Not heard about it. Okay, you told you were in from SN Bose hostel, na? Yes, sir. Who was SN Bose? So he was a scientist. Any one thing about him which makes him great? One discovery or field of research in which he was involved? Yes, sir. So I think it was Higgs boson particle, if I'm not mistaken. What is difference between semi-compact and compact section when it comes to steel sections? So semi-compact section and so they differ because of the plastic movement carrying capacity. The compact section can be yielded to the plastic movement capacity, while all the particles can be extended to the full plastic capacity. While in semi-compact, only the outermost fibers are extended to the yield capacity. And difference between semi-compact and slender? So slender section cannot even yield to can go to the yielding point. They fail before the yielding point. Okay. तो वैभव जी कैसा आप बताएं, पहले क्या असेसमेंट है आपका? सर मुझे लगा सर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था सर, थोड़ा सा स्टैमर कर रहा था सर। कॉन्फिडेंस तो एक हिस्सा हो गया, और सर काफी सारे क्वेश्चंस नहीं बता पाए जो बताना चाहिए था, लाइक कॉलेज से रिलेटेड एंड सब्जेक्ट से तैयारी करने की जरूरत है आपको। यस सर जी। और एंड सर बाकी तो सर इंटरव्यू कब है आपका? सर 30th को। और कितने मॉक कर चुके हैं आप? सर ये 3rd मॉक है। तो पिछले 2 में फीडबैक क्या था आपको? सर मेनली सर यही था कि सर थोड़ा सा वॉइस लो थी एंड कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था। अब ज़्यादा तेज बोलो, लाउडर बोलो। सर थोड़ा वॉइस लो थी और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो था सर। पहले भी आपसे कहा गया, पहले भी आपसे कहा गया, सर तो आपने फिर उसको इम्प्रूव क्यों नहीं किया? सर मैं सब प्रिपेयर होके आया था, बाहर खड़ा होकर जोर से बोलो, जोर से। सर बाहर सोच भी रहा था सर अच्छे से बोलूंगा सर, बट सिचुएशन में आके सर अपने आप ही सब वॉइस लो हो जाती है। अरे तुमको अभी बोल रहे हैं, अभी तो कोई सिचुएशन है नहीं, तो आराम से बोलो। छोटे भाई जैसे हो, तुमको बोल रहे हैं जोर से बोलो, तुम बोल नहीं रहे जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इसको ओवरकम तो आपको ही करना है ना। यस सर। देखो यहाँ तो जब आपको कुछ लूज नहीं करना, ये तो कच्ची नौकरी भी नहीं है। यस सर। ये तो एक मॉक है ना, तो बेटा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना पड़ेगा। सर प्रेशर में आके सर अपने आप ही सर थोड़ा नहीं, पर प्रेशर किस चीज का? आप इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड हैं, IIT से हैं, आपको नौकरियों की कोई कमी नहीं है। वर्स्ट का वर्स्ट क्या होगा, ये नहीं मिलेगी, इससे दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी यार। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाखों इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, कितने जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में भाई? ऑलरेडी यू आर गेट नॉर्मल तरीके से आप बात करना, अपना व्यूज जो भी आपका है, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और 26 साल की आपकी उम्र है, 26.5 साल की, तो आपका जो विचार है उसको फोर्सफुली कहिए, आप घबराइए मत, डरिए मत। ओके सर। एक मॉक और करिए हफ्ते बाद। ओके सर। और ऐसा नहीं कि यहीं आना है, आपका तीसरा मॉक है, तीनों में से जो भी जगह आपको अच्छी लगे वहाँ जाइए, जहाँ आपको लगा कि आपको अच्छा मिला है फीडबैक या रिस्पॉन्स या क्वेश्चन व्हाटएवर। वो अपनी बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी सॉन्ग का देखो आपने बड़ा एक मुसीबत बोल देंगे। कंटेम्प्रेरी सॉन्ग की एक तो परिभाषा फिक्स नहीं है। यस सर। दूसरा कौन सी भाषा, परिभाषा और भाषा कौन सी है भाई? अब आपको दुनिया भर की भाषा में
Yes, तो sir. ये आपने चक्कर डाल लिया, आपको कंटेम्प्रेरी हिंदी सॉन्ग लिख देते, कम से कम कुछ तो लिखते ना, यू अंडरस्टैंड। इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, Yes, sir. और ये नोटिस में आने वाली बात है। तो उसका एक जवाब, 2-3 जवाब लिख लीजिए और फिर उसमें देखिए कौन सा बढ़िया जवाब आपका बनता है। तो आप या कह दीजिए कि सर ये कंटेम्प्रेरी हिंदी सॉन्ग लिखना था, मेरे से गलती हो गई, Yes, दिस sir. इज व्हाट आई एम, Okay, मिस्टेक हो गया, गेट आउट ऑफ इट। Okay, sir. ये भी तरीका है। दूसरा BHUMU, सिंपल आंसर था कि सर दिस इज हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट है सर, तो इसको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी तक चल रहा है, किसी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, तो मेरे हिसाब से ये चलते रहना चाहिए। हाँ, नए नहीं बनने चाहिए क्योंकि नए बनने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। बात खत्म हो गई। शार्ट क्रिस्प आंसर Yes, sir. विद कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ये जरूरी है। गुजरात इलेक्शन, भाई आप अखबार पढ़ा करो ना यार, अब तो रोज का ये तमाशा हो रहा है, गुजरात हिमाचल इलेक्शन, डेट क्या है, सीट्स क्या है, थोड़ा पता रखिए आप। 3 एक्ट एम्पावरिंग वुमेन, सबसे बड़ा हुआ था पंचायती राज रिजर्वेशन 11 वुमेन का, वो तो बताया नहीं है। सर मुझे नहीं पता था सर। तुम्हें पता नहीं कि पंचायतों में औरतों के लिए रिजर्वेशन है, ऑफिस बेयरर्स में, मालूम है? नहीं मालूम है? सर ये मालूम है सब, पर ये नहीं पता सर ये कब आया सर। क्या मैं नहीं पता था? कि सर ये कब की बात है, सर मुझे लगा ये हमेशा से ही होगा। लेकिन है तो कानून तो है ना यार, ऐसा सर थोड़ा पता होना पढ़ना चाहिए ना। ऐसा। बाकी ये है कि ये आपका ट्रिपल तलाक तो खैर है ही है, ऐसा जो अभी हुआ है। बाकी ये निर्भया कांड वगैरह के बाद एक्ट बड़े पास में यार, दुनिया भर के वुमेन के वेजेस जो है इक्वल होने चाहिए मैन के, इस तरह की दिस नो लिमिट, ऐसा। छोटा मोटा। और अगर आप भूल जाएं तो कह दीजिएगा कि सर एट द मोमेंट आई एम अनएबल टू रिकॉल, ओके सर। एंड यू बकल अंडर प्रेशर, डोंट बकल अंडर प्रेशर। आप घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा सर आई एम नॉट श्योर, सर आप ठीक कह रहे हैं, मेरे से गलती। अरे ऐसा क्यों भाई? तो सर यही सब बार बार दिक्कत हो रही है सर। तो दिक्कत हो रही है तो इसको निकालो ना बेटा, सर तो हीरो तुम्हें तो निकालना है, इसको निकालो। सर पता नहीं सर, ऐसे कोई प्रेशर डाल तो मुझे लगता है कि सर तो अगर वहाँ पे सरकारी नौकरी जाएगी, प्रेशर को सर जैसे आप लोग सर ज्यादा नॉलेजेबल है, मुझे लगता है कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा कल नौकरी जाओगे तो अगर अंडर प्रेशर अगर बकल करोगे तो फिर नौकरी कैसे करोगे यार? इम्प्रूव करना है सर। कोई गलत काम करने को कह देगा तो कर दोगे, कि अंडर प्रेशर कर दोगे ऐसा तो अपना नुकसान करोगे, देश का नुकसान करोगे। ऐसा सर इम्प्रूव करना है सर। ये यंग कॉन्फिडेंट मैन कुछ नहीं होता। नहीं पता, नहीं सॉरी पता, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पता। दुनिया में सबको सब कुछ आता है क्या? नो सर। तो अच्छे से आप तैयारी करिए ओके सर। और कोट जो है ऊपर वाला बटन यूज करिए, दाढ़ी वाड़ी बनाइए। आप इंटरव्यू में सूट वूट पहन के आगे शेव नहीं किया आपने, क्या फायदा हुआ? सर क्लीन शेव में सर वो थोड़ा लड़कियों जैसा हो जाता है। ये कहाँ लिखा है? लड़कियों जैसा होता है? हम लिखा है यार। लड़कियां लग रहे हैं क्या? ये लड़की लग रहे हैं क्या वैसा? नहीं लड़की नहीं लग रही, मैं लड़की लग रहा हूँ, ये लड़की लग रहे हैं। लड़की तो मुझे थोड़ा एज काफी कम सी लगने लगती है तो। ठीक है। 26.5 की साल की उम्र में आई वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैंने IPS 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। क्या बात कर रहे हो बच्चों ऐसी यार? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुंह सूट दाढ़ी सब साफ कर देंगे तो एज हमारी कम लगने लगेगी। तो आप ऐसे ही जाओगे इंटरव्यू देने क्या? सर यस आई वाज थिंकिंग कैसे। डोंट डू इट, इट्स अ ब्लंडर। ओके ब्लंडर है ब्लंडर। हाँ ओके ऐसा लगेगा जैसे सुबह बस चले यार नाई धोए भी नहीं। बिल्कुल नहीं करना, नंबर कट जाएंगे। ओके सर। हाँ थोड़ा चटक होके जाओ बेटा। हाँ? ओके सर। ऑफिस में भी आप ऐसे जाएंगे तो कोई लाइक थोड़ी करेगा। यू हैव टू कम क्लीन शेव टू ऑफिस। आपको उम्र बढ़ानी है तो मूंछ बढ़ा लीजिए। एवरीडे ओके सर। ऑफिस में ओके आपका ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पता था, आपको फाउंडेशन डे पतंग पंचमी को होता है BHU का, आपको नहीं पता था, आपने नहीं कह दिया कि नहीं पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है उसमें भी आप आंसर दे रहे थे। तो जो ब्लफ करना है और गलत आंसर देना है, दैट शोज दैट इज ए बिग नेगेटिव एंड इट इज ए बिग नो। ओके आप वो इस तरह का आंसर देने का मतलब इंटरव्यू में है कि जैसे कि किसी हिंदू को आप बीफ खिला दीजिए, तो इट इज ए टैबू। आप गलत आंसर देंगे तो इट इज ए बिग नेगेटिव।
तो आपने कह दिया कि सारे हॉस्टल के नाम जो हैं साइंटिस्ट पर है। डीएन बोस साइंटिस्ट थे, वो आइंस्टाइन के दोस्त थे, लेकिन बाकी तो सब राजाओं के नाम पर भी हैं। यूनिवर्सिटी जिसने पैसा दिया उसके नाम पे रख दिया। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की सराउंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने बोल दिया बनारस जो है जोन 4 में है। बनारस कहाँ से जोन 4 में आ गया? बनारस इन जोन 3, मोस्ट ऑफ द इंडिया इज इन जोन 3। तो ब्लफ आप कभी मत करिए। नहीं मालूम है ना, सुनिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, ये ध्यान रखो। अगर आप 10 में से 5 सवालों का भी कह दें कि सर मुझे नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी 5 का ठीक जवाब दे दें। ओके सर। आरसीसी की लाइफ बेसिकली इसलिए है क्योंकि आरसीसी का डिजाइन स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि उसका क्रैक करेगा तभी स्टील में फोर्स आता है। तो क्रैक इज ए मस्ट इन आरसीसी, दैट इज व्हाई द लाइफ ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर इज आल्सो लो। एंड फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द आरसीसी ड्यूरेबिलिटी में हम लोग करते हैं कि क्रैक विड्थ जितनी कम हो उतना अच्छा है, उसके लिए अलग कोड है। तो आप मेन चीज़ है जो आपको आता है उसका आप जवाब दीजिए, जो नहीं आता है सीधे कह दीजिए आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट। अपनी सराउंडिंग्स का आपको पता होना चाहिए। यस सर। तो वो जरूरी है। ओके just add on, everything has been told. Don't be scared. ओके You have already qualified any services exam. कितने मार्क्स पता लग जाते हैं आपको? सर मार्क्स नहीं पता चलते सर। ओके फाइन, तो अच्छा ही किया होगा आपने। यस सर। पास किया तो अच्छा ही। डरने की जरूरत कोई है नहीं। क्वेश्चन का आंसर जैसे सर बताते थे, कोई भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप जवाब दें। हर एक वाली चीज नहीं पता, हमको क्या पता कि क्या पूछा, हम तो पूछ लिया थे, पूछा कि तो आइडिया लग गया। जितनी जल्दी आप नो करके आउट हो जाएंगे तो आपका जो टाइम होगा ना उसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाएगा, नहीं तो अटक जाएंगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही चलता रहेगा। इतनी मेहनत करी आपने और समय निकल गया, इंटरव्यू गड़बड़ हो जाएगा। इतनी मेहनत आउट करना है की है, बेकार मत करो। अब तो आप पहुंच गए किनारे पे यार, बिल्कुल हौसले से छलांग लगाओ। राइट, तो उसको क्वेश्चन का जवाब जो है जो नहीं आ रहा है वो जल्दी स्किप करो। सॉरी सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पर्सनैलिटी विल बी टेस्टेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज मुझे ताज्जुब ये लगा यार, बीएचयू आईटी में पढ़े हुए कि तुम किसी सुपरविजन में गए, हाउ इट कैन हैपन कि किसी जैसे हम यहाँ आते हैं, हमें यहाँ भी कुछ सीख के जाना होता है। आप कहीं टूर में भी जाते हो, वहाँ भी कुछ सीख के जाना होता है कि बस आए थे ऐसे ही करके चाय पी के चले गए। ऐसा तो होता नहीं है। मतलब यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दिमाग हमेशा काम करता है, साइंस और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, हाउ वाई ऑल दिस क्वेश्चंस कम टू योर माइंड। तो जैसे आप इंटर्नशिप की आपने, तो आपको ये बताना है कि सर मैं उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में मेरा ऐसा परसेप्शन था, वहाँ गया तो मुझे ये पता लगा, फिर मैंने ये सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो अगर कहीं गवर्नमेंट में कहीं मुझे काम करना पड़े तो ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल परमिट नहीं करूँगा, या ये चीज़ वहाँ अच्छी हो रही थी इसलिए ये करना है, या ये चीज़ मैंने सीखी। किसी भी जगह लर्निंग जो ओपन माइंड होता है ना, उससे लर्न तो करना ही करना है आपने। इंजीनियर हो यार, समझ, कॉमन मैन भी करता है। तो कैसा ये जो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, आप कहीं गए बोले तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। सर एक्चुअली सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था सर, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें पता थी, वहाँ पे उन्होंने बताई थी कि सर ये इतना ऐसा करते हैं, क्रैक मतलब एक बार में आपको यही पता होगा कि हमने सर आरएमसी नहीं देखी थी, ऐसे आती है फिर पंप से वो फ्लो के जाती है, फिर प्लेस करते हैं उसको। ये हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब आया तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ से पानी वानी मिक्स होके आता है, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल सही रहता है। तो जिस मुझे एक लर्न करने की चीज़ मिली, फिर बजाय साइड पर बनाने के हमें वहीं से लानी चाहिए आरएमसी। या उसमें ये खराब थी कि सर तो सेट हो जाती थी आने से पहले, उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, तो उसका टाइम ट्रांजिट ज़्यादा था, या ये चीज़ था, ये सीखने को मिला। कुछ तो आपने इसका मतलब आपने क्वेश्चन किए नहीं वहाँ पे, जिस समय आप काम कर रहे थे उस समय आपने क्वेश्चन नहीं किए माइंड के अंदर या किसी और। तो लर्निंग का जो जैसे प्रेशर में बकल करना और किसी जगह जाना और लर्न ना करना, ये टेंडेंसी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते यार, तो बहुत थोड़ा लाइफ पढ़नी पड़ती है ना, राइट, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपका इंटरव्यू कब है सर? 30th को। 30th को है, ठीक है। आप इससे अब नर्वस हो रहे हैं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आई विल सजेस्ट दैट आप एक डायरी रखिए अभी, ठीक है। अब लिखना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट है कि जितना भी सराउंडिंग में आपके हैं वो सब पता होना चाहिए, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, सबके बारे में सब कुछ पता। ये जो इसमें लिखा है ना, जो लिखा है तो सब पता होता है। तो वो जो लिखा है शब्द के बारे में, उसके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके।
तो क्या होता है कि जैसे आप अभी सोचते हैं ना तो भूल जाते हैं, Yes. अगर लिखेंगे उसको बार बार देखेंगे तो फिर जब वहां आपको पूछा जाएगा तो आपको रिकॉल करना आसान होगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज ये था कि जब आप Yes, sir. Yes, sir. मेरा आपको सजेशन ये है, आप एक 50-60 सवालों की लिस्ट बना लीजिए, बेस्ट। उसके नीचे आंसर लिखिए, बुलेट पॉइंट्स लिखिए, लंबे आंसर मत लिखिए, ओके सर, उसको रोज देख लिया करो, उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बैफ में और इन चीजों में मिला, ओके सर, यू विल डेफिनेटली देन बुक्स के नाम जो अपने आरसीसी फेवरेट बोला, मैंने टॉप 3 आईटी प्रोफेसर्स का नाम लिया आरसीसी में, तो वो आप बता तीनों में से किसी का नाम? एसेंस सिनावस मुझे सर पता। हाँ वही तो, और भी जो प्रोमिनेंट ऑथर्स है, आप एटलीस्ट 5-6 ऑथर्स के नाम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स यू शुड नो। उसके बाद आपने एक पॉइंट बताया कि मुझे वो बॉर्डर रोड में जाने का मन नहीं है क्योंकि उसका लोकेशन रिमोट होता है, ये आपको नहीं बताना है। ये बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है कि आप ये दर्शा रहे हैं कि मेरे को आई विल वर्क अंडर एनी कंडीशन, आप कंडीशन डाल रहे हो। अरे यार तू क्या सोचे, देश की सेवा करनी है? सोल्जर बेवकूफ है जो सियाचिन पे खड़ा है, एसी पे खड़ा है, ठंडी -40 में बंदूक लेके खड़ा है आपके लिए, और आप बॉर्डर रोड तक नहीं जा सकते। क्या एटीट्यूड है यार? तो मत इम्तिहान दो ना फिर। ओके, समझ रहे हैं? तो आपको इसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आई लाइक ऑल द सर्विसेज, मुझे एक चॉइस भरना था तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे पसंद है, अदरवाइज आई लाइक बॉर्डर रोड्स आल्सो। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है ये चीज। कोई आपकी वो उसको प्रेफरेंस तो चेंज हो नहीं जाएगी, जो भर दिया तो आप बिल्कुल बोलो तो उसको कि एटीट्यूड लगे गवर्नमेंट सर्वेंट में जा रहे हो, आप नौकरी में थोड़ी जा रहे हो यार। ओके, बॉर्डर रोड में मुझे लगा स्कोप ज्यादा नहीं है, ऐसा बोल दो, कुछ बोल दो समथिंग। ओके सर, आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो ना? यस सर, अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम है ना यूपीएससी का, यस सर, पब्लिक सर्विस है ना? यस सर, पब्लिक सर्विस में ध्यान दो दोनों शब्दों पे। पर्सनल सर्विस में नहीं जा रहा है, ये पर्सनल सर्विस मत करो इसमें या प्राइवेट, ये वो बेटर प्रेजेंट करते हैं। ये वीकनेस ये होना चाहिए कि देखिए मेरे पास 2 कैंडिडेट है, एक बोल रहा है मुझे कहीं भी भेजो सर आई विल वर्क, और एक बोल रहा है कि नहीं सर आप ना मुझे यही भेजोगे तभी मैं काम करूंगा। तो ऑब्वियसली जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ना कि सर्विस सिलेक्ट हो रहे हो, यस सर, तो फिर आप वहां जाओगे और फिर वहां पे अगर आप रोने लग जाओगे हो जाएंगे। हाँ तो फिर दैट शोज वीकनेस। आप अपने आप को बड़ी वीक पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वीक पर्सन, ऐसा नहीं करो। ओके सर, बिकॉज यू आर नॉट ए वीक पर्सन। हाँ ओके सर, और कॉन्फिडेंस जो कम हो रहा है ना, आप अपने पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। सर इनका गेट रैंक 51 है, ऑल इंडिया रैंक 51 इन गेट, तो दैट शोज दैट यू आर गुड। ऑल इंडिया में 51 मतलब आपके शायद 85 प्लस मार्क्स आए होंगे। यस सर, 100 में से 85 प्लस मार्क्स। नहीं, लेकिन इनका सब रटा हुआ है। अब इनको जैसे फील होनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर की सिविल इंजीनियरिंग की फील होनी चाहिए। मट्टी आपने देख लिया, आपको पता होना चाहिए क्ले है, बालू है, इसकी स्ट्रेंथ कम आएगी, इसमें हाँ इसकी स्ट्रेंथ कम आएगी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। जैसे आरसीसी में क्यों कम है, क्योंकि क्रैक उसमें है, इसलिए उसकी लाइफ कम होती है। तो वो फील जो है स्ट्रक्चर की, ऐसा वो भी नहीं। हाँ वो आप इन्वॉल्व होंगे तो उससे आएगी। फिर थोड़ा सर्विस करने से भी आती है, एक्सपीरियंस होने से भी आती है। इंटर्न का जैसा बोले कि आपको पता नहीं है तो आप एक बनाइए कि मैंने ये टेस्ट देखे, हो सकता है कि आपको ना देखे हो बट आप उसको बना तो सकते हैं ना आप उस, बट वही है कि आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपके एटलीस्ट 10-15 पन्ने भरे होने चाहिए, 15 पेज की डायरी। हाँ, ताकि आपको रिकॉल करने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आप अगर माइंड में जस्ट खाली पढ़ रहे हो ना तो भूल जाओगे। तो बनाइए कि आप क्या क्या टेस्ट, अब टेस्ट के नाम भी याद रख सकते हैं, कौन से कोड में से देखे। दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज व्हाट वी डू इन इंटर्न में तो वही करते जो हम कॉलेज में नहीं करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा आप लिखिए और ये सब ध्यान दीजिए। मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, यू आर वेरी गुड। ठीक है, आपको कोई सवाल पूछना हो, हमसे कुछ पूछना तो बताओ हम लोगों से। सर जो शुरू में मैंने इंग्लिश चूज की थी सर, क्या मैंने सही बोला था इंग्लिश? हाँ इंग्लिश सही। इंग्लिश वाज ओके सर, एंड वाज आई स्पीकिंग टू फास्ट? नो इट्स ओके, आई वाज स्पीकिंग एंड द साउंड लेवल वाज थोड़ा ऊपर करना चाहिए। साउंड लेवल तेज है आपका? अरे तेज करिए, आप वॉल्यूम हाई करिए, स्पीड कम तो आप ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा हाई करिए। अभी भी आप, हम लोग दोस्ती में बात कर रहे हैं तब भी धीरे धीरे बोल रहे हो और वीकली बोल रहे हो। आवाज थोड़ा भाई तुम सेलेक्ट हो जाओगे कल तो यू विल बी ए फेलो ऑफिसर, यस सर, है ना?
स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन नहीं रहेगा। ओके तो उस तरह से आपने भी सोचो, यू आर लाइक अस ओनली। ओके थोड़ा कैरम आपने लिखा है ना, तो कैरम का भी पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए। कैरम में वर्ल्ड कप होता है तो कब होता है, लास्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये तो प्रॉब्लम है सारा चीज। कहाँ याद हुआ, ज्यादा चीजें लिखोगे तो फंसोगे ज्यादा। कहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है तो अभी कुछ कैरम कर बार बार लिखा है। हाँ, आपने कैरम लिखा है तो वो डायमेंशंस क्या होते हैं कैरम के, उसमें आप कैरोस के सिंबल का मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड कप कब होता है, चैंपियनशिप्स कब होते हैं, कौन से रिनाउंड प्लेयर्स हैं इंडिया में, कौन से रिनाउंड प्लेयर्स हैं, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली डीएफ में आपने जो भी चीज लिखा है ना, एक एक चीज उसके पॉसिबल क्वेश्चंस खुद बनाइए और दो चार आंसर आपका लिखिए। ईमेल आईडी Okay. जीमेल है तो बताइए, जीमेल किस कंपनी के प्रोडक्ट है? सर गूगल का। गूगल कंपनी है कि अल्फाबेट है सर कंपनी? अल्फाबेट। मतलब इसमें जो जो लिखते हो ना सबका थोड़ा-थोड़ा सबसे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको ना कॉन्फिडेंस हमारा बड़ा कम है, इसी बार आ रहे हैं हम, इसलिए कम है आपको। ओके, थैंक यू। यू विल इंप्रूव Okay, इट, thank आई एम श्योर, वी आर वेरी श्योर। थैंक यू। नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू आपका बढ़िया होगा, एक और आप कर लीजिए। यस श्योर सर। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू।